बजट के बाद बाजार में मूड और माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्या बजट के बाद अब ये सोचना ठीक है कि इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ बड़ी संभावनाएं खुलती हुई नजर आ रही है? क्या 2016 का साल 2015 के मुकाबले में बेहतर साबित होगा? और किन एसेट्स में आपके लिए बनेगा पैसा, और बाजार का इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या रहेगा? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और क्वांटम एएमसी के चेयरमैन अजीत दयाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अजीत सर, स्वागत है आपका सीबीसी आवाज पर। क्या बजट वाकई में इतना अच्छा था कि बाजार का मूड पूरा बदल गया, या फिर एक्सपेक्टेशन इतनी कम थी कि बजट बड़ा अच्छा लग रहा है? इट यूज टू बी, होता था पहले, बहुत साल पहले, कि बजट मार्केट को डिटर्मिन करता था। अगर अच्छा बजट होता तो मार्केट ऊपर जाता था। अभी ये बजट में जब भी मंत्री जी स्पीच दे रहे हैं तो मार्केट गिर रहा है। हाँ, एक बार तो 300 पॉइंट नीचे गिरा था और एंड ऑफ द बजट स्पीच 150 पॉइंट्स डाउन। उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो अगर आपने देखा होगा, सब लोग तो हैरान थे कि क्या हुआ है इधर। बजट स्पीच के बाद मार्केट नीचे गया है, लेकिन जब ये मार्केट ऊपर गया पूरा दिन ऑन द नेक्स्ट डे, एवरीवन सेड वेरी गुड बजट, राइट? सो द मार्केट वेंट अप, पीपल सेड गुड बजट, but when they read the budget they didn't like it and the market went down. So it was very strange. I think what's happening is that there was a worldwide rally and stocks around the world had gone up, and India also took part in the rally. And something that happened very good in India कि लोगों के expectation बहुत कम थे। बजट के पहले expectation बहुत कम थे। तो when the budget was not so bad, you can call it a relief rally in some sense. There was nothing good for corporate India, many good things for rural India. अगर if you had closed your eyes and only had your ears open, अगर आंख बंद होता था और कान सिर्फ खुले थे, you would have thought this is a Congress budget. इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि बजट में बहुत कुछ बुरा हो सकता था, नहीं हुआ, मार्केट को वही रिलीफ है। करेक्ट, ओके, सही बात। तो अच्छा क्या हो सकता था जो फाइनेंस मिनिस्टर ने मिस कर दिया, कि उनके पास मौका था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ? तो कॉर्पोरेट इंडिया के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते थे। पीएसयू का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल स्टार्ट करते, बहुत कुछ कर सकते, कुछ नहीं किया। रूरल इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, वो देश के लिए बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में। कॉर्पोरेट इंडिया के लिए और अर्निंग्स पर शेयर BSE 30 इंडेक्स के बारे में कुछ अच्छा नहीं है इसमें। सो इफ यू लुक एट द अर्निंग्स ऑफ द इंडेक्स, जो अर्निंग्स आएंगे मार्च 2016 रिजल्ट्स का, वो मार्च 2013-14 का EPS होएगा, वो ही होएगा। There is no growth in earnings, and it is unlikely for the next 1 year that there will be a dramatic growth in earnings. Right. So, लोग शेयर खरीदते हैं earnings के लिए, और earnings में कुछ growth ही नहीं है। So, corporate India would have been expecting that something will happen to make their earnings go up. Something will happen to make their demand go up. The government will spend money on infrastructure. They'll announce something, some big bang. कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। मतलब अगर मैं कंपनी हूं और इंडिया में कारोबार कर रहा हूं तो मेरे लिए मेरी कंपनी की कमाई बढ़े, सेल्स बढ़े, उसके लिए कुछ नहीं है। बढ़ेगा हाँ। जब भी रूरल इंडिया में पैसा आएगा, डेवलपमेंट आएगा, तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने पहले आंसर में जो कही कि ग्लोबल रैली हो रही है और उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स भी बढ़े, और हमारी अंडर परफॉर्मेंस थी। बजट में जाने से पहले ग्लोबल मार्केट्स काफी स्ट्रांग हो गए, हमें डर था, हम नहीं बढ़ रहे थे, तो वो गैप अभी नैरो हो गया, अभी नैरो हुआ है। लेकिन सर, क्या ग्लोबल मार्केट्स में भी जो एक बड़ा डर था कि यूएस बेयर मार्केट में चला जाएगा, चाइना में तो प्रॉब्लम है ही, तो ये क्या है, वहां पे रिलीफ रैली है इतना गिरने के बाद थोड़े वहां के मार्केट रिकवर हो रहे, या ग्लोबल मार्केट्स में चिंताएं अब कम हो गई हैं? ग्लोबल मार्केट में भी रिलीफ रैली जैसा हो रहा है, और चिंता थोड़ा कम हुआ है क्योंकि यूएस इकोनॉमिक डेटा थोड़ा अच्छा आ रहा है। लेकिन ऐसे मत कि पूरा दुनिया में अच्छा ग्रोथ होगा, वो नहीं है अभी तक। तो इट इज स्टिल अ वेरी फ्रैजाइल ग्लोबल ग्रोथ। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डूइंग वेल, मोस्टली यूएसए। यूरोप में कुछ नहीं हो रहा है, चाइना में कुछ नहीं हो रहा है। तो ग्लोबल ग्रोथ इज वेरी वेरी रॉकी। Japan is not doing well either. So right now only USA is doing well, which is why we believe
that something has to change in the world. क्या इस बजट से अब ये लग रहा है कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सिंक में है? पहले गवर्नर साहब ने बोला गवर्नमेंट करेगी, अब उनके कोर्ट में बोल है। अब एफएम साफ तौर पर ये बजट बनाकर कह रहे हैं कि अब आरबीआई के कोर्ट में बोल है। तो क्या आप भी उस कैंप में जो मानता है कि बस अब आरबीआई को रेट कट करना चाहिए? आरबीआई जरूर रेट कट करेगी। मुझे लगता है कि जो आपने कहा बिल्कुल सिंक में है। इट इज लाइक अ जाकिर हुसैन शिव कुमार शर्मा कॉन्सर्ट, जुगलबंदी गोइंग। जुगलबंदी, राइट। आरबीआई कट रेट्स by 50 basis points in September 2015 and they said we've done what we have to do. अभी गवर्नमेंट का चांस है, अभी गवर्नमेंट का मौका है। गवर्नमेंट हैज डन व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। They have announced that they will keep deficit, fiscal deficit, at 3.5% of GDP in the next 12 months. And assuming again that the numbers are right, the ball is now in the RBI's court. और सर ये इसमें भी जुगलबंदी दिखती है कि एफएम ने सिर्फ 25,000 करोड़ दिए, बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन के लिए सबको कम लग रहा था, और दूसरे दिन गवर्नर साहब आ गए मैं एसेट रिवैल्यूएशन करने के लिए आपको रूम देता हूं। तो ऐसे में क्या जो बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा पिटा हुआ है, सबसे ज्यादा दिक्कत वहां है, बाजार का मूड सबसे ज्यादा उसने खराब किया है, क्या उसके सबसे बुरे दिन खत्म हो गए? बुरे दिन खत्म, yes, I think most of the worst days are over. There are still problems, but I think from a stock market pricing point, the worst days are over. And I think we have to go back a step and see Governor Rajan and CA Arvind Subramanian used to work together in the IMF. Okay. They were working together for years in the IMF. So they know each other well. They have written papers together in the IMF. Now one is in the Ministry of Finance and one is running RBI. So that Jugalbandi connect is very strong in my view. So इफेक्टिवली कह सकते हैं कि बैंक्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से बैंक्स will still have problems. अट्रैक्टिव हैं, और हैं तो क्या प्राइवेट बैंक्स या फिर पीएसयू बैंक्स? इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? तो क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में हम लोग का भी 10 साल का जैसे ट्रैक रिकॉर्ड विल कम आउट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एक्चुअली, राइट। बट ओवर द लास्ट ईयर विद दिस होल मोदी वेव, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड वाज सेलिंग and holding high cash. Okay. Around May, we had about 32% cash in May. Selling, nothing else to buy, so you hold cash. In the last few months, 32% cash. Maximum allowable limit is 35%. Okay. Because if you are more than 35% cash, you are no longer counted as an equity fund and you lose your tax status. Right. So very high cash. And when the markets began falling in May and then August, then October, November, December, January, we started buying. And the fund managers now have got less than 5% cash. And many of their investments have been in banking stocks in the last few months. Abhi ek kahavat hai ki you catch a falling knife. Right, sir. So we are catching falling knives, but hopefully in a sensible way. You can catch a falling knife and hold it from the side so you don't cut your finger. We're hopefully doing that. But just because we are buying doesn't mean the stock will go up. It may fall down further too. So what I'm saying is that in valuations in banking are looking attractive. And that's why we started buying the shares in the banking, private sector and PSU, both. But problems in the banking sector have not gone away. They will remain for some time. But we think they're already discounted in the price. Okay. So they are attractive. एक और फैक्टर जो इंडियन मार्केट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रूड और करेंसी का, इन दोनों का मूवमेंट आपको कैसे दिख रहा है आगे के लिए? आगे के लिए क्या डायरेक्शन है इनका? करेंसी के बारे में, करेंसी एंड क्रूड. So I think crude is little more, sort of, it's obviously a global thing. Worldwide, there's apparently the fight between Shia and Sunni. And what we are hearing is that Saudi Arabia is pumping oil, right, so that Iran cannot get market share and cannot get money. So that may be the real reason. So there's an oversupply of oil in the world, and price of oil has come down. And we don't know when it will go up. It's always been some recovery. Abhi ek hafte mein it's gone up by about 10% from the low price of oil. It may go higher, but we don't know when. We're not experts on crude. On the rupee side, it has been a strong dollar. So the Indian rupee has become strong against those currencies which are based on commodities. So Indian rupee has become strong against the Canadian dollar.
become strong against the Australian dollar, against the New Zealand dollar, but it's become weak against the US dollar because the US dollar is a strong currency. So, and against most emerging market economies, our currency has been relatively stable. But I'd like to add one thing. August 2013, when the crisis happened around the world and India's share market went down, our rupee went to 68 rupees to a dollar at that time in August 2013. Modi ji was elected as the BJP's nominee for Prime Minister in September. Right. From September 2013 till he won the election in May 2014, the rupee became strong. From 68, we went to 58. The day Mr. Modi got elected, the rupee was 58 rupees to a dollar. Right. Right? So it became strong. Now again, from the day he got elected till now, it's got back to 68. Exactly where we were in August. Right. So that's the swing of the currency in terms of the people's moods. लोग ने यही सोचा कि मोदी जी आ रहे हैं तो India will be a very good economy to put money in, and the rupee became strong. And then they saw nothing really happening, so then the rupee sort of drifted. Again, at the same time, the US dollar has become stronger too as a currency. So I think over the next few years, the rupee will continuously, in our view, weaken a little bit, 2-3% every year. That's why we recommend people buy gold. We think gold is a nice place to put money in, some of your money in. अभी भी? Of course, always. No matter what the price, keep some money in gold. That's our view. Okay. Protection. Protection, insurance. Insurance. अजीत दयाल साहब से बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है क्वांटम म्यूचुअल फंड के चेयरमैन अजीत दयाल साहब। 3 से 5 साल इक्विटी और फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, कहां बेहतर मौके हैं? At this price, index of 23,000, 24,000, right. Equity. Okay. On a 3-year basis. Equity, lot of equity. Okay. एक और चीज, जनरली आप गोल्ड के लिए हमेशा आप बात करते हैं, बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जिनकी आदत गोल्ड में पैसा लगाने की है, रियल एस्टेट में पैसा लगाने की है, और अगर फाइनेंशियल सेविंग कहीं लगाएंगे तो भी एफडी में ही लगाएंगे। बैंक एफडी में, वो म्यूचुअल फंड में भी नहीं आते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में भी नहीं आते हैं। तो इन 3 एसेट क्लास में पैसा लगाने वाले इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है? इन तीनों से बढ़िया 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी होराइजन लेना हो, इक्विटी ही बेटर रहेगा? Equity best asset class. Real estate, if you need it, अगर आपको चाहिए यूज के लिए, so you should get real estate. But real estate to buy for your daughter, son, you can if you want for emotion. But it does not make sense. Today I can rent a house for 2 rupees a year. Why would I pay 100 rupees for that house? Absolutely. If I buy it, I have to pay 100. 100 रुपया देने का है, किराए पे 2 रुपया। तो अगर मैं वो 100 रुपया ले लूँ और बैंक में डालूँ और उसमें 8% इंटरेस्ट मिलेगा एफडी में, तो 8 रुपया वहां से मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स भी लगा दो, 6 रुपया हाथ में आ गया, 2 रुपया जो रेंट के किराए के लिए, 4 रुपया खीसे में, पॉकेट में। तो व्हाई वुड आई वांट टू बाय व्हेन आई कैन रेंट? प्रोबेबली अब तक इंडिया में लोगों को कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत मिला है और इमोशंस भी हैं। आई थिंक इट्स मोस्टली इमोशन, एंड यस देयर हैज बीन अप्रिसिएशन, बट देयर हैज आल्सो बीन लॉस नाउ, पीपल हैव रियलाइज्ड। राइट। कमिंग बैक टू आपका जो बड़ा कन्विक्शन है, जबरदस्त भरोसा है कि इक्विटी बेहतरीन एसेट क्लास है लंबे समय में, इंडियन मार्केट्स में क्या सिर्फ इस वजह से इस वक्त शेयर खरीद लेना चाहिए कि बहुत पिटे हुए हैं, बहुत गिरे हैं, इतना नीचे हैं, या फिर वाकई में कोई ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं आगे कि जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में तेजी होगी? ट्रिगर्स यही है कि अर्निंग्स ऑफ इंडियन कंपनीज, अर्निंग्स ऑफ BSE 30 और इंडेक्स कंपनीज और एनी कंपनी विल डू वेरी वेल, नॉट दिस ईयर, नॉट नेक्स्ट 12 months, बट 2 साल आगे, 3 साल आगे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा होगा इंडिया में। सो अल्टीमेटली जब भी शेयर लेते हैं वो अर्निंग्स के लिए लेते हैं, एंड वी सी द अर्निंग्स ग्रोथ कमिंग अप। पिछले 2-3 साल में अर्निंग्स ग्रोथ तो था ही नहीं कुछ भी। तो पीपल हु वर बाइंग शेयर्स लास्ट ईयर, 1 साल पहले इंडेक्स तो 30,000 के ऊपर था, and people were buying shares, and we're kind of wondering, okay, why? You can put some money, but not hopefully a lot of your money. So since the Modi victory in May 2004, there have been, I think, 7 months when Indian retail investors have put more than 6,000, 7,000 crores in any one month in the market. A lot of strong flows, a lot of equity flows. Right. So my question to the fund managers are,
that when you were taking all that money, आपने इन्वेस्टर को कहा कि मार्केट एक्सपेंसिव है, कि you should not be putting your money so much into the fund, or as a fund manager were you happy? क्योंकि जितना भी ज्यादा पैसा आपको आएगा, आपको फी मिलेगा, फी से तो सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, आपकी तो बहुत खुशी, और इन्वेस्टर को लटका दिया उधर. तो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम विद आवर इंडस्ट्री, दैट वी आर एसेट गैदरिंग, वी आर नॉट एसेट मैनेजिंग. राइट. हम लोग का सेबी का लाइसेंस है एसेट मैनेजिंग, लेकिन हम लोग की एक्शन है पूरा एसेट गैदरिंग. क्वांटम में ऐसा नहीं है. लेकिन अजीत दयाल साहब से बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. हमारे साथ है क्वांटम म्यूचुअल फंड के चेयरमैन अजीत दयाल साहब. बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया जो एसआईपी कर रहे हैं, और बहुत लोग ये समझ रहे थे कि अब तक सिर्फ एक ही एसेट क्लास है जिसमें पैसा बन रहा है. 2015 तक लग भी रहा था, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि ये इक्विटी में भी पैसा नहीं बन रहा. एसआईपी बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, नया पैसा नहीं लगाने के बारे में सोच रहे हैं. उनके लिए क्या सलाह है आपकी? उनके लिए मैं यही बोल सकता हूं कि जो भी आपके फंड मैनेजर थे, जो भी आपके एडवाइजर थे, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि आप लोग के मन में क्या था जब भी आप लोग ने हम लोग को कहा, इन्वेस्टर लोग को कहा कि बहुत पैसा लगा दो मार्केट में. सो आई से वन अदर थिंग, दैट वी हैव टू हैव इक्विटी. मिस्टर इंडिया, अगर मिस्टर इंडिया एक आदमी हो, मिस्टर इंडिया का उम्र है 28 years old, median age in India. Right, sir. अगर मिस्टर इंडिया फाइनेंशियल प्लानर के पास जाए और बैठे, जैसे हम लोग बैठे, और उनसे पूछे कि अभी हमारे पास 100 रुपया है, तो मैं 100 rupees what should I do for the next 20-30 years? वो फाइनेंशियल प्लानर तो यही कहेगा, राइटफुली सो, कि यू आर 28 years old, you are young, you can take risk, you must put lot of your money in equity. That I fully agree. Right. That Indians must put lot more money in equity. The problem is, when should they put the money? At 30,000 index? At 28,000 index? When there was all this like stuff going on in the air, that Mr. Modi has won election, new prime minister आया है, तो कुछ होने वाला है, लेकिन उसका सबूत क्या था? What was the proof that something will happen? Expectation अलग बात है, but what was actual actions to say कि स्टॉक मार्केट विल गो अप? अब जब एक्सपेक्टेशन एकदम बॉटम लेवल पर है, दिस इज राइट टाइम टू पुट मनी. वंडरफुल टाइम टू बाय. चलिए, तो ये एक लुक अप क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, लुक एट आवर ट्रैक रिकॉर्ड, स्टडी व्हाट वी डू एंड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म अप्रोच वी हैव टू इन्वेस्टिंग. There are many times we'll be wrong. Please don't get me, we're not geniuses. Many times we'll be wrong. But two things work for us. One is कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं देते हैं. Right. There is no leakage. अगर आपने 100 रुपया डाला फंड में, पूरा 100 रुपया आता है स्टॉक मार्केट में. There'll be fees and all that, but there's no distribution fee. Right. Second thing is we have a disciplined process, long-term value investing, and that long-term value investing, from our perspective, is the best thing to look at. That's what we believe. It's worked for us. Hopefully it works for our investors. बिल्कुल. तो कई डिकेड से आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, मार्केट्स को देख रहे हैं ऊपर नीचे होते हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ बनानी है तो फिर इस तरह के कमजोर बाजार में पैसा लगाने का वक्त है, न कि तब जब हर आदमी एक ही बाजार में बड़ी तेजी है. तो लंबे समय में पैसा बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि जब बाजार का मूड खराब हो और हर आदमी एक कि नहीं अभी थोड़े खतरे हैं, तब आप पैसा लगाइए. ये कहना है अजीत दयाल साहब का. और अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में इक्विटी ही सबसे बेहतरीन रिटर्न देगी, ये उनका अनुभव है कई दशकों का. अजीत दयाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सर. और इस खास चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत. बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर. नमस्कार.